Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Umi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Today I am going to start some lectures on EDS, Everyday Science, जो जीके में कंसीडर होता है CSS और TMS में. ये जो है तीन सब्जेक्ट्स होते हैं वह मिला के आपको 120 आउट ऑफ 300 उठाने हैं. उसके बाद इसमें चार पोर्शंस हैं EDS में. बायोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, फिर कंप्यूटर सिस्टम हो गया और आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है. तो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 आपको करने होते हैं. तो आज हम शुरू करते हैं फिजिकल साइंस. एस्ट्रोनॉमिकली सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट developed for use in astronomy, adopted by International Astronomical Union in 1976 and has been significantly updated in 1994 and 2009. It is a tri-dimensional system in that it defines unit of length, mass and time only. इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक आपका टाइम, मास एंड लेंथ. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम क्या है? Astronomical unit of time is a day defined as 8686400 seconds. 365 days make up one Jupiter year. Symbol of days used. Astronomical unit of mass किलोग्राम होता है. एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ लेते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास इज सोलर मास. द सोलर मास इज 1.9 is a standard way to express mass in astronomy. It is equal to the mass of sun. Astronomy unit of length मीटर में मेजर होती है. Defined as the average distance between the sun and the earth, approximately 150 million kilometers. Astronomical unit light year, parsec are the units of measuring huge distance. A light year, it is a distance that light travels in 1 year in a vacuum. एक साल में लाइट जितना सफ़र करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं. 5 × 8 × 10 रोलो माइल्स के बराबर है. अब पारसेक क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस that is equal to 3.26 length light year. It is a distance at which a star equal have a period of 1 second. इसके अलावा यूनिट्स पढ़ेंगे हम. यूनिवर्स the vast empty space around us that consists of celestial bodies, stars, solar system, galaxies. It is the totality of everything that exists. Origin of universe. The Big Bang theory is a leading explanation about how the universe began. The Big Bang theory came from mathematical theory and models. Its theory dates back 13.7 billion years ago. The concept of singularity suggests that some 13.7 billion years ago, the entire universe was inside bubble that was thousands of times smaller than a pinhead and was named as distinguished singularity. It was hotter and denser than anything we can imagine. The singularity suddenly exploded. We know was time, space and matter all began with the Big Bang theory. रेड से शिफ्ट एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी के एविडेंस हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज moving away from Earth, red shift is longer and radar wavelength. Blue shift, it is opposite to red shift. Penzios and Wilson detected a cosmic microwave background and radiation by studying radio signals. Microwave radiations came from our sides. अब आ गया हमारी गैलेक्सी. टर्म्स हैं जो फिजिकल साइंस में इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अभी गैलेक्सी है. लिटरली गैलेक्सी मीन्स मिल्की. It is a gravitational bound system of stars
star remnants, interstellar gas, dust, and dark matter. The dust 100 to 2 billion galaxies in the universe range in size few thousand stars to million of stars, categorized according to this morphology, elliptically, spiral and irregular. टाइप्स ऑफ ये हैं, गैलेक्सी के चार हैं, elliptical, spiral, irregular. उसके बाद ब्लैक होल, the active center of most of the galaxies, it is a massive object or origin in space that is 50 radians that within the certain bodies or radius. As a gravitation field does not let anything escape from it, not even light. Milky Way, the larger disk shaped includes our solar system. A spiral galaxy is disk shaped, as old as universe 13.7 billion years old. Besides sun contains about 2 to 400 billion stars. एक सोलर सिस्टम है जिसमें इतने जो है जो स्टार्स हैं सोलर सिस्टम में, फिर एक सोलर सिस्टम इसमें पहले तो 9 थे प्लैनेट्स, अब 8 हैं, अ फेन बैंड ऑफ वाइट. मेन फीचर्स 1,00,000 लाइट ईयर इन डायमीटर्स. सन टेक्स 250 मिलियन ईयर्स टू ऑर्बिट इट. Our solar system is 3,000 light year away from its center. Andromeda is the nearest galaxy to the Milky Way. ये नाम याद रखें, MCQ पूछ लेते हैं कि एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे के साथ कौन सी गैलेक्सी नज़दीक है, आप याद कर लोगे एंड्रोमेडा. उसके बाद हमारा आ जाता है सोलर सिस्टम. सन हो गया सोलर सिस्टम. Sun is a star, planets, dwarf planets, satellites, asteroids, meteorites, comets, ये सारी चीज़ें इसमें सोलर सिस्टम में आ जाती हैं. Our solar system 4.5 billion years. Solar nebula, a huge cloud of gas and dust formed in. Solar system is a result of gravity. Under gravity, the clouds collapsed. It is elliptical in shape, shaped like an egg. The sun contains more than 99 of the solar system's mass. The sun basically क्या है, स्टार है. It is a huge ball of gas, mostly hydrogen and helium की production है. Nuclear fission reaction inside the star release enormous amount of energy. Scientists usually divide the sun into three main regions: the sun's interior, the sun atmosphere, visible surface. The visible surface of the sun lies between the interior and atmosphere. The sun's interior, further, there are three main parts of sun: interior, core, and the radioactive zone, and the connective. The core, it is the center part है इसका sun का. The hottest region, nuclear fission reaction occur there. Density is about 150 times of water. टेम्परेचर जो 15 मिलियन है, सन टेम्परेचर कितना है हमारा 15 मिलियन है. उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन, इट इज द एनर्जी कैरीड आउट बाय फोटॉन्स एज थर्मल रेडिएशन. रेडियो एक्टिव thermal is hot and dense. Thermal radiation transfers the intense heat of the core onward. For connective zone, it is a dominant mode of energy. Hello. इसके अलावा heat moves through upward convection, thermal convections. When the material cools off at the surface, it plunges downward to the base of connective zone to absorb more heat. At photosphere, the boundary between the sun's interior and the solar atmosphere, ये आपका photosphere. It is what we see the visible surface of the sun. Chromosphere, the lower region of this solar atmosphere. Corona, the uppermost portion of the sun atmosphere. It is much hotter than photosphere. ये इसका जो है shape है.
सन से सन स्पॉट हो गया, रेडियो एक्टिव जोन हो गया, कनेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, किरोना, क्रोमोस्फीयर, ये सन की जो है फिगर है. कीप इन माइंड, रिमेंबर इन योर माइंड. उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स जो प्लानट के हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं. अभी जो हमारी टॉपिक है इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ सोलर सिस्टम. अब डायमीटर ऑफ सन, वो एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, आप याद कर लें. मास ऑफ सन इज, सन ऑफ मास ये होगा. फिर सन इज कंपोज ऑफ 74% ऑफ, जो हाइड्रोजन है वो 90% है, जो हीलियम 8%, जो 2% है वो अदर गैसेज है. डेंसिटी ऑफ सन इज 1.41. द टेम्परेचर कोर ऑफ सन ये है 5 मिलियन. मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 150 million kilometers. Sun is very large and active. Magnetic field. The sun is moving around the center of the galaxy at velocity of 220 kilometers per second. It revolves around Milky Way in about 250 million years. The sun's rays reach Earth's surface in 8 minutes and 20 seconds. उसके बाद प्लैनेट्स हैं. द वर्ड प्लैनेट्स, ये फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सन की थी, जिसमें हाइड्रोजन 98%, हीलियम एंड 2% अदर गैसेज है. फिर प्लैनेट्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड. प्लैनेट्स ग्रीक वर्ड है जिसकी माना है वांडरर्स. Our solar system is 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. प्लूटो था वो 9th नंबर पे, अभी वो डिलीट हो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो सोलर सिस्टम से वो बहुत दूर चला जाता था. उस हिसाब से सोलर सिस्टम से अभी है सही, यूनिवर्स में इस तरह है ही नहीं, है सही मगर सोलर सिस्टम में नहीं है. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द प्लैनेट्स closest to sun. They are called inner planets. Inner planets, they are mostly made up of rocks. Planets are categorized in transitional planets, then terrestrial planets and Javerian planets because of their composition. Terrestrial planets rocky, made up of rocks, and Javerian means Jupiter like, made up of gases. फिर ये इनमें डिफरेंस है कि जो टेरेशनल प्लैनेट्स हैं वो जेवियन प्लैनेट्स हैं. ये जो है हमारे सारे क्या है, टेरेशियल प्लैनेट. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, स्मॉल मासेस एंड रेडियस. क्लोज टू द सन, रॉकी सॉलिड सरफेस, हाई डेंसिटीज, स्लो रोटेशन एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड, नो रिंग्स, फ्यू मून्स. उसके अलावा जो जेवियन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया. लार्ज मासेस एंड रेडी, far from sun, gaseous surface, low in densities, fast rotation, strong magnetic field, many rings and many moons. उसके बाद फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स. फिर मर्क्यूरी क्या है, ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है. डायमीटर जिसका 49 किलोमीटर है. इट इज़ अबाउट द सेम साइज हेज आर मून. It is closest to the sun relatives revolves in 88 days around the sun. It means ये एक चक्कर पूरा करता है around the sun 88 days में. It has no atmosphere, no moon. It is made up of the dense rocky materials. It is very high density. Its temperature varies from 170 to 450
centigrade. That is 58 million किलोमीटर अवे फ्रॉम सन. वीनस हो गया. उसके बाद वीनस हार्टेस्ट है, ब्राइटेस्ट भी है. मॉर्निंग इवनिंग प्लानट बोलते हैं इसको. टेम्परेचर राइजेज टू, it has thick clouds of carbon dioxide. It is so hot, it appears so bright, it is about equal to the size of Earth. Therefore, it is termed as sister planets of Earth. उसके बाद it has several large inactive volcanoes. It rotates from east to west. It spins very slowly. Its one day is equal to 243 days. Like Mercury, it has no moon. Earth, most colorful and densest planet, biggest of all the terrestrial planets. It is the fifth largest planet in solar system. Venus is closest planet to the Earth. Diameter is 12 12756 kilometers. Earth is the only planet of solar system which support life. इसमें जो 30% है या 29% वो अर्थ जो सरफेस लैंड है, वो जो 70% है वो वाटर से कवर्ड है. इट इज़ वन मून ल्यूना नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस आर makes its atmosphere for complete one rotation around the sun in 365 days. Rotation around its axis 23 hours 56 minutes and 4 seconds. तो ये एम सी की इसमें चीज़ें आती हैं. कीप इन माइंड एंड नोट. डेंटेस्ट प्लान 552. फिर मार्स हो गया. सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानट है. रेड प्लानट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड डस्ट है. टेम्परेचर वेरी वेरी कोल्ड, -30 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है मार्स का. इट इज़ आल्सो टालेस्ट माउंटेन्स, डीपेस्ट वैलीज. उसके बाद इट इज़ 2 मून्स for Phobos and Deimos. Its atmosphere is composed of carbon dioxide. Mars diameter 6080 km, rotation 24 hours and no minutes, revolution period 687 days. फिर इसके बाद जुपिटर जो सबसे बड़ा है, वो लार्जेस्ट भी है. 1350 जो है टाइम्स इट इज़ बिगर देन अर्थ है. फिर ग्रेट रेड स्पॉट है. लार्ज बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग. इट इज़ 67 मून्स. और इसके अलावा गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम. वन डे ऑफ जुपिटर 9 hours. It is rings with an earth so visible. Saturn, second biggest planet, है, surrounded by rings made up of ice and rotation period is 10 hours 15 minutes. It has winds which can follow 18 kilometers. Density इसकी ये है. और it has 62 moons है. इसके अलावा Titan, Saturn's moon, second largest moon, diameter is 12800 kilometers. Average temperature इसका -180 सेंटीग्रेड है. यूरेनस ग्रीन प्लानट इसको बोलते हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन. रैपिड रोटेशन 600 किलोमीटर्स, 27 मून्स. उसके बाद है रोटेशन पीरियड ऑफ 17 hours, revolution equal to 84 अर्थ ईयर्स. डायमीटर. फिर नेपच्यून दूर है बहुत, अवे फ्रॉम, इट इज़ टू अवे फ्रॉम सन. फर्देस्ट प्लानट फ्रॉम द सन. कोल्डेस्ट ऑर्बिट पीरियड 165 years. इट्स विंड ब्लोज. इट इज़ 14 मून्स. डायमीटर जो इसका ये है और 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन. बिगेस्ट मून टाइटन. डिफरेंस बिटवीन प्लानट्स एंड सन प्लानट्स एंड सोलर स्टार्स में क्या फ़र्क है? जो आपका स्टार है वो मिसिव शाइनिंग है, और स्टार शाइन्स बाय रिलीजिंग लाइट प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फिशन. Different heavily objects revolve around stars such as planets, dwarf planets. Star revolves around the center of their galaxy. Stars have very high temperature. Sun
एंड प्रोक्सिमिजा, ये एग्जांपल है इसके, दोनों ये एग्जांपल्स हैं इसके। उसके बाद आ जाते हैं planets. Planets is a round body that orbit is a star. Planets do not produce light. Objects that revolve around the planets called satellites. Planets planets जो है, जो स्टार है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। Planets energy and heat from sun, 1 year to sun, one hotter example Earth, Venus, Mars। तो इसके अलावा दूसरा है हमारा dwarf planets। According to IA, the dwarf planets are celestial bodies that mean in the orbit around a star but not itself a satellite। के बाद आ जाता है it is sufficient mass, spherical in shape, it is not clear the neighborhood around to orbit, so the difference is of area, they are small in size। 5 officially organized planets Ceres, Pluto, यूरेस एंड मैग्नेट, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्लैनेट्स पे काम करती हैं। प्लेटो, इट वाज वंस लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, इट इज 5 मून्स, ऑब्जेक्ट्स विद इन कूपर बेल्ट आर विद इन इट्स ऑर्बिट। मून नेचुरल सेटेलाइट अराउंड द प्लैनेट अर्थ का ये नेचुरल सेटेलाइट है मून। फिर अवर मून नेम्ड ल्यूना, इसका नाम जो है ल्यूना है, इज 5th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। डायामीटर इसका ये है एंड मास इसका ये है, आप देख लें। इट्स डेंसिटी एंड एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज, इट्स ऑर्बिट इज अराउंड 27 days and 7 hours। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, टेम्परेचर, it has no atmosphere, negligible amount of inert gases, it takes 1.3 seconds to moonlight to reach earth। 1.3 जो है सेकेंड्स लेता है, और साइज इसकी ये है। ellipse, when one heavenly body such as moon or planet earth moves into the shadow of another heavenly body, so ellipse यही है, heavenly body हो, कोई भी heavy body हो, वो मूव करे, उनके दरमियान एक आ जाए, ये है। सो lunar ellipse है, moon orbits the earth revolves around the moon, when earth moves between, it means when earth comes between sun and moon is called lunar ellipse। Instead of light hitting the moon's surface, earth shadow falls, the earth casts a long periodical shadow in space। Umbra is an area where the light of the sun is wholly obscured। पेनबेरा, पेनबेरा होता है, अम्ब्रा होता है। अम्ब्रा पेनबेरा का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें मुकम्मल होता है, अम्ब्रा में जो हाफ पार्शियल शेडो होता है, इसमें फुल शेडो होता है अम्ब्रा में। और जो पेम्ब्रा है, PNUMBR है, उसमें पार्शियल शेडो होता है। जब कोई भी बॉडी हेवी बॉडी एक दो के दरमियान आ जाएगी। उसके बाद फिर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूनर एलिप्स, पेनम, ये है पेनम्ब्रल ल्यूनर एलिप्स, पार्शियल टोटल ल्यूनर एलिप्स। द मून ओनली पासेस थ्रू द पेम्ब्रल ऑफ अर्थ शेडो। द सेकेंड, व्हेन पार्ट ऑफ द मून, एक पार्ट हो, आधा हो। टोटल, टोटल जो है व्हेन इंटायर मून पासेस थ्रू द अम्ब्रेल रीजन ऑफ द अर्थ है, ओवरऑल चीज़ें जो है वो पास हो जाएगी, वो आपका टोटल है, टोटल ल्यूनर एलिप्स। ये इसकी फिगर है, look at this figure and try to note very important things in this figure। फिगर लूनर एलिप्स, ये मून, फिर अम्ब्रा हो गया, पेम्ब्रा हो गया, उसके अलावा ये मून है, ये अर्थ है। उसके बाद सोलर एलिप्स है। सोलर एलिप्स क्या है? द मून्स कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ये होगा हमारा सोलर एलिप्स। देखें आप देख लें, ड्यूरिंग सोलर एलिप्स द मून causes shadow on earth।
उसके बाद टाइप्स ऑफ सोलर इलिप्स, अ टोटल सोलर इलिप्स अकर्स विद द मून कंप्लीट कवर द सन। पार्शियल जिसमें आपकी जो है हाफ जो है वो occurs when the earth, moon and sun do not align in a straight line. Moon only partially covers the device of the sun. Alarm never look directly at the sun. ये जो फिगर है इसकी है सोलर एलिप्स है। सोलर एलिप्स देख लें, नोट करें जो चीज़ें हैं ना, आप देख लें जो पॉइंट्स हैं वो नोट करें। उसके बाद हो गया एनुअल सोलर एलिप्स, अर्थ सन रोटेशंस। अर्थ रोटेशन देखो किस तरह हो रही है, ये देखो अर्थ रोटेट्स on its own axis. This rotation is counterclockwise from west to east. Earth position title to the sun. It takes 24 hours to complete one rotation. उसके बाद due to constant rotation we don't feel नहीं हो रहा ना कि क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं अगर ये मूव हो रहा तो हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये इसकी स्पीड है ना, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तब हम वी कांट फील समथिंग एल्स। इस तरह हम फील करते हैं रेस्ट में है। दिस रोटेशन इंटायर्ड आउट अराउंड द imaging lines, so called poles, north and south pole. Effects of rotation causes several striking effects on the surface of earth. ये जो पॉइंट्स हैं आप नोट कर लें, जो भी है पॉइंट्स नोट कर लें। उसके बाद अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, वो हम देख लेते हैं। जो ज़मीन की रोटेशन है अराउंड द सन वो किस तरह हो रही है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन in 365 days, 5 hours 48 minutes and 46 seconds. We name it tropical year that follows an elliptical path around the sun because of ellipse path. It varies its distance. The inclination and polarity work together with rotation and revolution to produce the changes of seasons. ये जो फिगर है वो आप ध्यान में रख लें, नोट कर लें, क्योंकि जो भी पेपर है वहाँ पे जो फिगर है, फ्लो चार्ट है, फैक्स फिगर है, मैप है, वो वहाँ पर क्वेश्चन में मस्त है एक्सेप्ट एसे एंड कंपोजिशन। उसके बाद जो हमारा लेक्चर है ईडीएस का वो वेदर एंड क्लाइमेट पे है।